Hello guys, welcome to our channel. Today we are studying some important terms to remember for the chapter number 6, chapter number 2, whole number in class 6. Let's see what is successor. The successor of a whole number is a number obtained by adding 1 to it. ठीक है, यानी गिवन नंबर या फिर whole नंबर को मैं सिर्फ क्या ऐड करता हूँ, मैं 1 ऐड करता हूँ, या फिर गिवन नंबर में अगर मैं वर्ड 1 ऐड करता हूँ तो इट मीन्स that is called successor. ठीक है, द सक्सेसर ऑफ वन इज टू, इट मीन्स वन का अगर मेरे को सक्सेसर निकालना है तो क्या ऐड करूंगा, वन ऐड करूंगा, देन वन प्लस वन इज टू. सेम एज सक्सेसर ऑफ टू, अगर सक्सेसर मेरे को टू का निकालना है देन क्या ऐड करूंगा, वन ऐड करूंगा, देन टू प्लस वन दैट इज थ्री. लेट्स सी व्हाट इज प्रीडिसीजर. What is predecessor? The predecessor of a whole number is one less than the given number. यानी गिवन नंबर में से क्या करना है, प्रीडिशर निकालना है तो क्या करूंगा, वन को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. लेट्स सी द प्रीडिशर ऑफ वन, अगर मेरे को वन का प्रीडिशर निकालना है तो क्या करूंगा, मैं वन माइनस कर दूंगा, देन वन माइनस वन दैट इज जीरो. इट मीन्स द प्रीडिशर ऑफ वन इज जीरो. सेम एज द प्रीडिशर ऑफ टू, सेम एज द प्रीडिशर ऑफ टू निकालना, देन माइनस करूंगा वन, then 2 minus 1 that is 1, then the predecessor of 2 is 1. ठीक है, the whole number 0 does not have any predecessor. तो जीरो का कोई जो जीरो predecessor है उसका कोई भी whole number predecessor नहीं होता. Let's see the property of whole number. Closure property. Definition is if a set of a number is such that a given operation on the number result in a number for the set, then the set is closed under that operation. It means कोई भी सेट किसी भी नंबर का इस फॉर्म में दिया गया है कि उस पर क्या लगाऊं, मैं कोई भी ऑपरेशन लगाऊं उस नंबर पे, देन द रिजल्ट क्या आएगा, वो भी क्या आएगा, सेट की फॉर्म में आएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, देन द सेट इज क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन. लेट्स सी द सेट ऑफ ए इवन नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन. लेट्स सी 2 plus 4, and the 2 is even number and the 6 is also even number, and the sum of the two even numbers is always be even, then 2 plus 4 is 6. Closure property of on addition for whole number. Let's see 0 plus 1 that is 2, and 1 plus 3 that is 4, and 5 plus 6 that is 11. So whole number are closed on addition. Closure property on multiplication of a whole number, 0 into 2 that is 0, 1 into 4 that is 4, 5 into 1 that is 5. So whole numbers are closed on multiplication also. Let's see closure property on a subtraction of a whole number, 5 minus 0 that is 5, 0 minus 5 that is minus 5, and the 1 minus 3 that is minus 1, minus 2, 3 minus 1 that is 2, so that the two parts does not reply in positive, then the whole numbers are not closed on subtraction. तो whole numbers क्या होगा, subtraction में closed नहीं होता. Same as the property of division of whole numbers, then 2 by 1, 2 divided 1 that is 2, and 1 divided by 2 not a whole number. Same as 0 divided by 2 is whole number, but 2 divided by 0 not a whole number. It means so the whole numbers are not closed in a division in short. ठीक है, let's see closure property. Closure property, if a and b are any two whole numbers, if a and b two whole numbers, then a plus b and a into b are also whole number. अब कह रहा है अगर a और b अगर कोई भी दो whole number हैं, if we add the two given whole numbers, then the answer is always in a whole number. Then the same as if a and b are the whole number, then we multiply two whole numbers, then the answer is always in a whole number. Same as the commutative property, the order in which two or more terms are multiplied does not change the product. कह रहा है अगर दो या दो से ज्यादा गिवन नंबर्स का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं और उनका क्या कर देता हूं, अगर मैं ऑर्डर को चेंज कर देता हूं, अगर मैं ऑर्डर को चेंज कर देता हूं, देन देयर इज नो इफेक्ट ऑन आंसर. इट मींस द ऑर्डर इन विच टू और मोर टर्म्स आर मल्टीप्लाइड डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट, देन द प्रोडक्ट क्या होगा, चेंज नहीं होगा. इट मींस द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. लेट्स सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑन एडिशन फॉर होल नंबर्स.
So whole numbers are commutative on addition. Let's see 0 plus 2 or 2 plus 0. Then the both are 2. Then answer is 2. Same as the commutative property on multiplication. If we multiply a into b या फिर b into a, then the both are equals. Same as if we multiply 1 into 2 या फिर 2 into 1, both are the answer is 2. It means commutative property on multiplication for the whole numbers. Let's see. Whole numbers are commutative on multiplication. Whole numbers commutative property on subtraction of the whole number. ठीक है, let's see. If we subtract 5 minus 1, that is 4, then 4 is a whole number, but 1 minus 5 is not a whole number, it means whole numbers are not commutative on a subtraction, but whole numbers are commutative on multiplication and addition. Let's see. Commutative property on division of the whole number. The given number is 2. If we divide 2 divided by 1, that is also 2, that is a whole number. But if we divide 1 by 2, then it is not a whole number. It means whole numbers are not commutative on division. Okay? In short, you can add two whole number in any order. मैं किन्हीं भी दो whole number को किन्हीं भी order में add कर सकता हूँ and multiply two whole numbers in any order. ठीक है, but we can't divide any two numbers in the commutative division and the subtraction. ठीक है, it means the whole number does not obey the commutative property of division and the commutative property of the subtraction. ठीक है, then the commutative property, if a and b are any two whole numbers, then a plus b is equal to b plus a, and a into b is always equal to b into a. Let's see associative property. The associative property says the way in which three or more terms are grouped does not change the sum. It means या तीन या दो से ज्यादा किन्हीं ग्रुप को मैं अगर ऐड करता हूं, उनके क्या कर देता हूं, ऑर्डर को चेंज कर देता हूं, then the sum is never be changed, is called the associative property. Let's see associative property on addition of for a whole number. Let's see 0 plus 2 plus 3. If we add 0 को ऐड करें किस में, 2 plus 3 में, या फिर 2 को ऐड करता हूं मैं 3 plus 0 में. इट मीन्स ऑर्डर को क्या किया, मैंने चेंज कर दिया. देन वी सोल्व 0 plus 2 plus 3, that is 5. Then 2, firstly solve the bracket, 3 plus 0, 3. Then the 0 plus 5 is 5 and 2 plus 3 is 5. It means the associative property on addition for the whole number. So the whole number are associative on addition. Let's see the next point. Associative property on multiplication for a whole number. If you multiply 0 into 2 into 3, या फिर मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूं, 2 multiply with 3 into 0. It means 0 multiply with 2 into 3, that is 6, and 2 multiply with 3 into 0, that is 0. Then the 0 into 6, that is 0, and the 2 into 0 is always 0. It means whole numbers are associative on multiplication also. Okay, let's see the next point is associative property on subtraction. Let's see the subtraction. If 10 minus 2 minus 1 is given and 10 minus 2 minus 1 is given, it means ऑर्डर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया. लेट्स सी 10 minus 2 minus 1 is, that is 1. 10 minus 2, that is 8 minus 1. Then the 10 minus 1 is, that is 9, not equal to 8 minus 1, that is 7. That means 9 is not equal to 7. It means the whole number does not obey the property of associative on subtraction. Okay, then the whole number are not associative on the subtraction. Let's see the next point. Associative property on division of a whole number. Let's see 16 divided by 4 divided by 2 and 16 divided by 4 then divided by 2. Let's see
16 divided by 4 divided by 2, that is 2. 16 divided by 4, that is 4 divided by 2. Now 16 divided by 2, that is 8, is not equal to 4 divided by 2, that is 2. It means whole numbers are not associative on a division. Okay, let's see the next point. If A, B and C are any two whole numbers, then A plus B plus C is equal to A plus B plus C, and A into B into C is equal to A into B into C. Then the next point is distributive property. Let's see the distributive property. Distributive property, one of the property of a addition in which a factor is distributed over an expression in a paरेंथेसिस. लेट्स सी a को अगर हम ऐड करते हैं b प्लस c में, then we solve the bracket a into b, that is ab, and a into c, that is ac. Example is, that is 2 into 3 plus 5. Let's see, we solve the bracket 3 plus 5, that is 8. Let's see, 2 into 8, that is 16, and we solve the bracket 2 into 3, that is 6, plus 2 into 5, that is 10. Then the 6 plus 10 is 60. ठीक है, let's see the next point is, if a, b and c are any two whole numbers, then a into b plus c is equal to a into b plus a into c. ठीक है, additive identity, if a is any whole number, then a plus 0 is equal to a and 0 plus a. ठीक है, it means additive identity क्या होगी किसी भी whole number की, वो आइडेंटिटी, इट मीन्स अगर मैं उसमें ऐसा क्या नंबर ऐड करूं कि उस पर क्या हो कोई भी इफेक्ट ना पड़े. इट मीन्स अगर मैं किसी वोल नंबर में अगर मैं 0 को ऐड करता हूं, देन द गिवन वोल नंबर क्या होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इट मीन्स 0 इज द एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए वोल नंबर. ठीक है, सेम एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, द आइडेंटिटी यानी वोल नंबर में मैं क्या वो नंबर डिजिट ऐड करूं या फिर नंबर ऐड करूं, सॉरी क्या वो नंबर मैं मल्टीप्लाई करूं, किस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करूं कि उस डिजिट उस वोल नंबर पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े. इट मींस अगर मैं वोल नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इट ऑलवेज बी ए वोल नंबर. इट मींस 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए वोल नंबर. इट मींस अगर मैं किसी वोल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो उस वोल नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. दैट इज, लेट्स सी, अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, 5 into 1 दैट इज 5, एंड 6 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करता हूं दैट इज 6. इट मींस 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए whole number. Let's see, multiplication by 0. कह रहा है if a whole number, if any whole number is multiplied by 0, then it will be a 0. कह रहा है अगर किसी भी अगर मैं whole number को 0 से मल्टीप्लाई करता हूं या फिर 0 को मैं किसी भी whole number से मल्टीप्लाई करता हूं, then it will always be a 0. Let's see, 1 into 0 that is 0, 5 into 0 that is 0, and 0 into 0 that is also 0. Let's see, division by 0. If a is a whole number, a given whole number है, अगर किसी में whole number को 0 से डिवाइड करता हूं तो it will not defined. ठीक है, let's see, the next point is natural number. Natural numbers are given example 1, 2 and 3, and a whole number में टॉपिक था क्या, प्रेडिशियर क्या होता है, प्रेडिशियर यानी गिवन नंबर का पहले वाला डिजिट, पहले नंबर, यानी द गिवन डिजिट इज गिवन नंबर इज 18, देन द प्रेडिशियर ऑफ द 18 इज 18 minus 1 that is 17. ठीक है, इट मींस द नंबर दैट कम्स बिफोर, यानी गिवन नंबर से पहले वाला जो नंबर वो क्या होगा, प्रेडिशियर होगा. ठीक है, लेट्स सी whole number, the numbers we starting from 0, 1, 2, 3 up to so on, that is called a whole number. ठीक है, let's see property of a whole number. Property of whole number क्या क्या शो करता है, property of a whole number. For division, closure property, a divided with b is not equal to c, and the commutative property, a divided by b is not equal to b divided by a. But let's see, it means associative property does not hold good for division, but for addition, property of a plus b
सॉरी ये तो प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन होगा। लेट्स सी फॉर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, additive identity a plus b is equal to c, then the associative property of a करेगा, इट मींस a plus b का सम को मैं ऐड करता हूँ c में, या फिर a को ऐड करता हूँ सम ऑफ b plus c, then it will always be equal. It means associative property for the addition of the whole number. Let's see the commutative property for addition. A plus b is always equal to b plus a. Then the property is for subtraction, a minus b equal to 0, not always. The commutative property of the subtraction does not obey, and a minus b is not equal to b minus a. Same as property of 0, a minus 0 is not 0 and 0 minus a is not defined. ठीक है, let's see for multiplication, closure property a into b equal to c, then the commutative properties says a into b is equal to b into a. Same as the associative property is, अगर a into b की को मैं a into b की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ c से, या फिर a की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ b into c से, then it is always be equal because the whole number obey the associative property of multiplication. ठीक है, ठीक है, लेट्स सी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ए होल नंबर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।